Hi everyone. This is the seventh lecture for the chapter Chemical Control and Coordination, as well as the second lecture for Human Reproductive System. As you may have understood, we are going to study these two together. So, in the last class, we discussed the male reproductive system, spermatogenesis, and also how the endocrine system or the different hormones regulate the male reproductive system. Today, we will be discussing the female reproductive system. Let us understand first what all organs are included in the female reproductive system. So, it includes a pair of ovaries, which is seen here. Okay, they are egg shaped organs. So, there is a pair of ovaries. Then you have a pair of oviducts. The red colored tube like structure that you see are known as oviducts. Oviducts are also known by other names like fallopian tube and uterine tube. These oviducts, they open into this muscular pear-shaped structure. If you look at it clearly, it looks like an inverted pear. Okay, the outermost boundary, if you consider. Okay, so this pear-shaped structure is known as uterus. Uterus is also known as womb. Okay, because this is where the child grows. After uterus, there is a muscular narrow cavity which is known as cervix. Cervix opens up into a huge cavity which is known as vagina. Vagina then opens out, and there you can find the external genitalia. So, all of these together constitute the female reproductive system. Along with these parts, there are a pair of mammary glands present in women, and these together they are integrated structurally and functionally to support the processes like ovulation. So together all of these organs as well as the pair of mammary glands, they help in ovulation, which is release of the ovum, fertilization, which is basically syngamy. Okay, sperm plus ovum is equal to zygote. That is, in short, the fertilization. Then pregnancy, birth, and child care, which is when the child grows up to 6 months or at least 1 year of age. Okay, so all of these processes are supported structurally as well as functionally by all of these organs in the female reproductive system. Now, I just want you to focus on the right hand side diagram first. Okay, this is a front view of the reproductive system. These bones that you're seeing together, they form the pelvic girdle. Okay, you must have heard of pectoral girdle, which is your shoulder. Okay, the girdle which is present around your shoulders, and this here is the pelvic girdle. Okay, together the whole ring-like structure is known as girdle. You can see the tailbone here. Okay, these are the tailbones, fused tailbones, sacrum, fine, and coccyx. Fine. In front of them, you can find this inverted pear-like structure, which is the uterus, from which there are two ovaries attached, and from the ovaries you have on the top two oviducts. Fine. Now these thin wire-like structures that you see are actually ureters coming from the kidneys. Okay, so from kidneys you have two ureters, and this small round organ that you can see is actually the urinary bladder. So from the front view, this is how your female reproductive system looks like. Now, if you remember from the first class, we had discussed that in females, the pelvic girdle, okay, it is a little broad. The waist is a little broad. The reason for it is there is quite some space, okay, in this area, because the child growth will happen here, okay, and during childbirth also, the child has to be pushed through these bones, right? So for that reason, the waistline or the pelvic girdle, it is broader in case of women. Fine. So on the left, what you see is actually the diagram given in your textbook. Now, sometimes the diagrams can be asked to find out the labelings or to find out the function of the given organ or the given label. Okay, let us say X. So it is quite important to understand the textbook diagram as well. Okay. Let us understand, this is the cross section. Okay, this is the front view which we just saw, and this here in your textbook is the cross section. If you look at it from the side, how it will look.
Starting from the back, okay, this here is the back region, this here shown, the rounded portion is actually the buttock. So starting from the back, you can see the tailbone. In front of the tailbone or the vertebral column, you have the digestive system, okay, the end portion of the digestive system, which is rectum. Okay, rectum, the function of rectum is storage of stools, right, or the feces. So you can see the rectum and then the opening, which is known as anus. So these are the two parts of the GIT which are shown in the diagram. In front of this digestive system, you finally have the female reproductive system. As you can see, it is a little curved. Okay, so the ovaries are not shown here, important to remember. You can just see the cross section of uterus. So this here is the uterus, which opens into a narrow opening known as cervix. Cervix opens up into vagina, and vagina finally has the vaginal orifice or the opening. Okay, orifice basically means hole or opening. Okay, and you can see in the curve of uterus there is presence of urinary bladder. So you can see the bladder here. Bladder opens outside by this small urethra. Okay, urethra is the duct that carries the urine. Okay, now in front of this urinary bladder you can find this structure. Now sometimes students make mistake of labeling it as ovary. It is not an ovary. Okay, if you look here in this right diagram and the left diagram, you can see that it is actually this bone, okay, which is shown from the side view. So this bone is known as pubic symphysis. So if you look at this right hand side diagram carefully, you can see the bone, the pubic bone, and there is a little bit of gap between the bones. This is connected by some connective tissue, okay, which is a little stretchable. So that part is known as pubic symphysis, which you can see here. Fine. Apart from that, the other labelings are of external genitalia, okay, from clitoris to labia minora majora, which we shall understand when we move to the female external genitalia part. Okay, let us discuss all of these organs one by one, starting with the basic organ, which is core to female reproductive system, which are the ovaries. Okay, they are the primary sex organs. Now you can have primary sex organs as well as secondary sex organs or accessory sex organs. So primary sex organs means the organs which actually generate your gametes. Okay, so if any organ it is generating the gametes, it is known as primary sex organ. So the primary sex organ in case of females is ovaries. It generates the female gamete, also referred to as ovum, and several steroidal hormones. A pair of ovaries are present in the lower abdomen. As you can see, it is almost present at the end of the abdominal cavity. Right? Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length. Now, if you see here, the ovaries are about 2 to 4 centimeters lengthwise, and they are connected to the pelvic wall as well as the uterus by ligaments. So sometimes students make mistake of considering this as the fallopian tube or as the oviduct. It is important to remember this is just a ligament. Okay, it is just a connective tissue which is connecting the uterus with the ovary as well as ovary with the pelvic wall. Okay, so this flap like structure that you see it is also a ligament which just connects this ovary to the pelvic wall. Okay, it is fixing the ovary's position in the body. Fine. Each ovary is covered by a thin epithelium, and when you cut the ovary, okay, here you can see the cross section. If you take a cross section of the ovary, here outside you can see the epithelium. Okay, the outermost covering is the epithelium. The inner portion is known as stroma of ovary. Fine. Now stroma is divided into two parts or two zones. The outermost light lavender or light blue colored part that you see is known as cortex, and the inner red colored part that you see is known as medulla. The red part or the middle part actually has the nerves as well as the blood vessels. Okay, and the cortex is the region where ovarian follicles are found in different stages. Okay, you can see these are the different ovarian follicles and they are present in the different stages.
After the ovaries, let us talk about the oviducts or fallopian tubes. So these are the fallopian tubes, okay, coming out from each side. This again is your textbook diagram. Fallopian tubes, then uterus and vagina, they form the accessory female ducts, okay, or female accessory ducts. Now, recall we have even discussed such male accessory ducts, which included the rete testis, vas efferens, vas deferens, right? So, same way, it is important to remember here as well that you have some female accessory ducts. These accessory ducts help in the transfer of ovum, okay, from ovary to uterus, okay. So, each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. So, each of these tubes, they are 10 to 12 centimeter long and extends from the ovary to uterus. So, this inverted pear-shaped structure is your uterus, and you can see that the oviduct or the fallopian tube, it starts from the ovaries and ends in the uterus. The end closer to the ovary is funnel shaped. So this end, okay, this part which is closer to the ovary, it is a little funnel shaped, right? So this funnel shaped process is known as infundibulum. Okay, from funnel you can remember infundibulum. Infundibulum is also referred to as oviductal funnel. Fine. So here you have infundibulum. The infundibulum has fimbriae. Fimbriae means finger-like structures. Clear? These finger-like projections called fimbriae, they help in collection of the ovum. As you can see, there are many and they are finger-like projections. They will pick up the ovum when it is released from the ovaries. This is how it happens. Can you see? This is one finger-like projection picking up that ovum and pushing it inside towards the fallopian tube. Now talking about the infundibulum, which leads to a swollen part, okay, a little enlarged part or wider part, which is known as ampulla. Ampulla, you can remember wherever it comes, it always means a little swollen region, okay. Whenever it is a little swollen, a little wider part, it is known as ampulla. The last part of oviduct, which is here, it is known as isthmus, and isthmus has a very narrow lumen. Fine, and isthmus joins with the uterus, so that lining is common. The uterus is a singular or a single inverted pear-shaped structure. Fine, so it is, if you look at it, it looks like an inverted pear. Okay, this is, if this is a pear, it looks like an inverted pear. Now people normally ask me, ma'am, it does not look like a pear, because they look at this portion, okay, which looks like an inverted triangle actually. But when they are saying pear, they are talking about this outer boundary, okay, the whole organ, it looks like a pear, hence the name. Okay, so it looks like an inverted pear. It is also known as womb, as I already mentioned, and the uterus, which is this part, it opens into a narrow region which is known as cervix. Okay, so this part here is cervix. The duct or the canal is known as cervical canal. This region in general is known as cervix. It is a very muscular part, and in between the canal, okay, it is known as cervical canal. So you can see it is in a better diagram. This is your textbook diagram. This is a little better diagram. So this portion here is the cervix, and when you look at it, let us say from down, okay, you are looking from down above. So this part, this ridges where you are seeing, okay, ridges means all these linings where you are seeing, that is the vagina. And from the vagina, when you look, then this whole rounded structure is actually the cervix. And you can see how narrow it is. Okay, it has only a very small, very narrow opening. So this here is the cervix. And then you have a quite wide opening, which is vagina, right? The cavity of cervix is also known as cervical canal. And together, the cervical canal, which is this part, as well as the vagina together, it forms the birth canal. Okay, so whenever the baby is born, it pushes through this cervix as well as the vagina. So you must have heard or you must have seen in some movies where they say that, oh, cervical dilation is this much, 3 centimeters, 10 centimeters, right? So those centimeters are actually showing how much this opening has opened up, okay, during birth process.
birthing process. Fine. Okay. Talking about the uterus, we have seen all of the parts anatomically right now. Let us talk about the uterus a little bit in detail. So if you take a cross section of the uterus, it is made up of three layers. Fine. Whenever you talk about uterus, it is made up of three layers. The outermost layer is known as perimetrium. Now remember, metrium is common. Peri means periphery. Okay, and periphery means boundary. So the outermost layer will be perimetrium. It is just a protective layer. Okay, it is an external thin membranous layer. After perimetrium comes the myometrium. Wherever you hear the word myo or sarco, sarco, or myo, it means muscle. So here you have myometrium, which basically means the muscles of uterus or uterine muscles. Here, okay. So it is a middle layer and it is thick layer of smooth muscle. So you must have studied the three types of muscles. You have skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. So smooth muscle are present here. It exhibits strong contraction during delivery of the baby. So if you have ever wondered that how or what muscles are involved in pushing the baby out, the muscles of uterus. Okay, the baby will be present inside the uterus, right? So the uterus has to contract and then only the baby will be pushed out. The endometrium or the innermost layer, okay, which is shown here in a lighter color. It is the inner glandular layer. All of these projections, can you see? All these dark patches, tube-like structures, they are actually glands, okay? And what do glands do? They secrete something. So in this case also, they secrete the vaginal fluid, okay? And uterine as well as vaginal fluid. And what does this fluid consist of or made up of? It is mostly mucus, okay? Mucus, then a little bit of acidic um, watery substance which keeps the cavity clear of all the bacteria or any organism, okay? So those things are actually secreted by these glands present in the endometrium. So endometrium, endo, you know, it means inside, right? So endometrium is the innermost layer of the uterus, and this is the layer which undergoes cyclical changes during the menstrual cycle. So during menstrual cycle जो layer affect होता है, that is only this endometrial layer. And this also I should mention कि endometrial layer जो है उसमें भी दो parts होते हैं, which is not in your syllabus, but just know कि कभी menstruation के time पे पूरा endometrium flow नहीं हो जाता, okay, break नहीं हो जाता. Can you see this part which I have highlighted, okay, which I have circled? तो इसके अंदर का जो भी portion है, this might be lost, okay, in form of menstrual blood या menstrual tissues. लेकिन बाकी का जो endometrium है, that stays just as it is. तो पूरा endometrium जो है, that is not secreted or released out, okay, during the menstrual cycle. ये बात जानने के लिए important. Fine. So coming back to the topic, these are the three layers of your uterus. Now talking about the external genitalia, we have discussed the anatomy of female reproductive system. We also saw the histology. Histology is study of tissues, right? So we saw the histology of uterus. Now talking about the external genitalia. So if you look at a female reproductive system, okay, from outside it looks like this. It includes mons pubis, labia majora. Now, I don't know if I've ever taught you, but I mentioned to some class where I said that labia, you should remember the term because labia actually means lips. Okay, so you may have even heard of bilabiate flowers. Okay, bilabiate family of flowers, which basically means the flowers have two petals which look like lips. So wherever you have the term labia, labia actually means lips. Okay, so you have mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, and clitoris. So in total, if you count, you have mons pubis 1, labia majora 2, labia minora 3, hymen 4, and clitoris 5. 5 organs or 5 parts in the female external genitalia. Now let us go discuss all of these one by one. Okay.
Now, if you remember, I told you about that pubic bone, right? So wherever there is that pubic bone, on top of that pubic bone, there is presence of mons pubis. Okay, so in front of pubic bone, you have mons pubis. So if you look at behind, you will have the bone. Okay, and in front of bone, you have mons pubis, which is shown here. Okay, it is the topmost part, and it is present above the pubic bone. Yeah. So mons pubis is actually a cushion of fatty tissue. It is a fatty tissue. It is a soft tissue covered by skin and pubic hair. Then you have these two parts, okay, the left and the right. These thick portions that you can see, they look like lips, okay, so they are known as labia majora, both sides. So you have two parts of labia majora, one on the left and one on the right. Okay, now these are the fleshy folds of tissue which extend down and surround the vaginal opening. So this here is the vaginal opening, and it is surrounded by your labia majora. This labia majora then has on the inner side labia minora. Okay, labia again means lips, minora because they are minor. Minor means thin. Okay, small. So these are the thin tissues which are known thin flaps. Okay, literally flap-like structures which are known as labia minora. The opening of vagina, which is here, it is often covered with a membrane known as hymen. And finally, you can find at the top, okay, wherever you have this labia minora present together, okay, combining on both from both sides, you have this small rounded structure which is known as clitoris. So together, these are the major parts of your female reproductive external genitalia. Now talking about the textbook diagram, you can see it here. This is the cross section. This is the front view. This is the cross section view. Okay. So this portion here is the urethral opening. Important to remember here is that in females, the urinogenital system is different. Okay, you have different or separate urinary tract, and you also have a separate genital tract. Both of these are not combined, like in men. In men, you have urinogenital tract. Here, you have separate openings. Urethral opening is the opening for the excretory system. Okay, for urethra, from where the urine will be passed. Beneath that, you have the vaginal opening. Vaginal opening is the one for reproductive system, okay? And then you have the final opening, the third opening on the back side, which is the anus, which is opening for the digestive system, okay? Now looking at your textbook diagram, you can see here, this is the clitoris, okay? This portion here showing is the clitoris. This cross section, okay, the outermost region is your labia majora. These portions, these lips like structures, when you cut it and you look at it from the side, it will look like this. So you have labia majora. Inside you have labia minora, which is here in the shaded portion, right? And at the vaginal orifice, you can see this from the side. It is a vaginal opening, which is shown here and here. Fine. So these are the rest of the labelings from the same diagram. Now, just some social constructs and a little discussion about hymen. So, hymen is often torn during the first coitus. Coitus, just another term for intercourse or the sexual act. Okay. So, this is how the different types of hymen are present. Okay. You can have any of these present in different women. Fine. You have these are all the varieties. Okay. So, basically, it can be broken by any case. Okay, it is not just because of intercourse that a hymen can be broken. It can be broken by a subtle fall or joint because of some accident or insertion of vaginal tampon. So tampon is basically just tube like structure. Okay, it is not even a tube, it is a plug actually made up of cotton. So this cotton is rolled out into a you can say a finger-like structure, okay, and that is used for menstruation, during menstruation. Funny thing about that is that it was first used to actually plug in the bullet holes during World War when soldier used to have
bullet holes, okay, in their hands and arms and chest and all. So to plug those holes, these tampon like structures were used, which are nothing but they were rolled cotton. So after that, the women started using it for menstruation. Then these are the vaginal tampons. Okay, so if vaginal tampons have been used, then also the hymen may be broken. Then in active participation of some sports, especially like horseback riding or cycling or adventurous sports like mountaineering, it is very often seen that the hymen gets broken. In some cases, because it is a flexible membrane, okay, even after coitus, this hymen may be intact, okay, nothing happens to it. So it is not a very good reliable indicator of virginity or sexual experience, which is just, again, as I said, a social construct. Okay, in this patriarchal system, it is just a social construct that has been brought up. Okay, otherwise it is not. If you talk about it in biological sense, it is not of any importance, right? So being elite students, okay, because you are studying biology, you understand some things better, okay, you have that privilege of being educated. So the reason why these things are given in your textbook is to make sure that the social stigma, okay, and the social norms and all, they are broken. Fine. So this was all about hymen. It is just a membrane-like covering on the vaginal opening. Now, talking about the last organs which are special to the female reproductive system, they are the mammary glands. As we have seen, mammary glands in men are vestigial, that is, they are of no function. The mammary glands are very commonly known as breasts, are paired structures that contain glandular tissue and variable amount of fat. Now, wherever, of course, you have to produce milk, you require a lot of energy. So, this mammary glands, they are actually a very fatty tissue. The amount of fat varies. The glandular tissue, glandular, wherever you hear the word gland, you can understand that it will be secreting something, right? So, here, the glandular tissue, it has 50 to 20 mammary lobes. This structure that you can see is one lobe. Okay, that one lobe can also be known as lobule. So you have 15 to 20 such lobules. Clear? Now inside these lobes or lobules, when you, this is how it looks like outside. If you remove one more covering, on the inside it looks like this. Fine. So inside it has clusters of cells which are known as alveoli. Okay, just like your lungs. In lungs also you have alveoli. In mammary glands also you have alveoli, which are these swollen structures in the end that you can see. Okay, so you have a lot of alveoli present in each lobe. The cells of alveoli secrete milk. So these are the ones that the cells of alveoli are the one which secrete milk, and these milk then enters the different ducts. Okay, ducts are nothing but they are tube-like structures, which is stored in the lumen of alveoli, and the alveoli opens into the mammary tubules. These are the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. Okay, here you can see in the cross section, okay, the bottom diagram, you can see the alveoli, and from the alveoli you also can see the mammary tubules, and the mammary tubules, they are combining to form the mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. So again here the ampulla term. Can you see this portion in the blue color? It is a little wider portion, right? You have thin tubes and then very wide portion. So this wider portion are actually known as ampulla. Clear? Here do not focus on the labelings. They are a little advanced for you. So just remember what is given in your textbook or what is related to your textbook, right? So in your textbook it is said mammary ampulla. So remember them as mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out. Okay, so the final this part that you can see is the lactiferous duct, and through the nipple the milk is finally sucked out. Right? So from the outside, you can see that the breast or the mammary gland, it is divided into this normal skin-like structure, okay, which is a little swollen, and then you have this special areola. Areola is the colored portion.
And finally, the tip is known as nipple, from where there is an opening for the milk to be sucked out. Now, coming to the gametogenesis portion of the female reproductive system. As we have seen spermatogenesis, same. In the case of female reproductive system, there is oogenesis. Okay, the process of formation of mature, my mistake, mature female gamete is called oogenesis. Okay, when you make a mature female gamete, the whole process of formation of that is known as oogenesis. It is markedly different from spermatogenesis. Now, in your textbooks, there is a special diagram given showing how the oogenesis and spermatogenesis are different. Okay, so it is important to just focus on that diagram. The probability of it being asked, the diagram being asked in the exam is less because it is a huge diagram. But there can be questions asked from the information shown in the diagram, so it is important. Okay, so yeah, oogenesis, it is initiated during embryonic development. Embryonic development is when the fetus is there. Okay, the embryo, that is the baby, is still developing. So at that stage, if the baby is a female, okay, if it is a female baby, then during that stage only there will be initiation of the development of female gametes. Okay, so here a few million gamete mother cells, which are known as oogonia. So gamete mother cells, just like sperm mother cells, they are diploid. So you can see here 2n. They are known as oogonia. If you remember, the sperm mother cells were known as spermatogonium. So here the name remain somewhat similar, right? Spermatogonium, oogonium. These oogonium are diploid in nature. No more oogonium are formed after birth. If you remember, in male reproductive system or in spermatogenesis, oogonia, spermatogonia, they can undergo mitosis. है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस करके बहुत ज्यादा और भी स्पर्मेटोगोनिया बना सकते हैं just by mitosis. Here, oogonia में mitosis होगा, but it will form the primary oocyte, और ये प्राइमरी oocyte के बाद कभी भी नया oogoनियम बनेगा नहीं. ठीक है, बर्थ के बाद there will be no more oogoniums formed. So this is the difference between male, which is spermatogenesis, and female oogenesis. Here, spermatogenesis में spermatogonium mitosis से till the end of life वो divide होते रहेंगे. Okay, from puberty till end of life. But here oogenesis में एक बार जितना भी एम्ब्रियो या फीटस है, बेबी है, उसके अंदर बन गए oogoनियम, उतने ही रहेंगे after birth. Clear? There is no more oogoनियम added. These cells start division. मतलब ये जो oogoनियम you can see, they divide by mitosis so that you have a lot of other oogonia. These oogonia undergo the first stage of meiosis, है ना, वो उसमें meiosis की बस शुरुआत ही होती है. तो शुरुआत में क्या होता है, you have meiosis 1. meiosis 1 में भी अगर आप याद करो तो prophase 1, और prophase 1 में there are 5 different stages, right? So this primary oocyte is arrested in prophase 1. ये बात भी याद रखना जरूरी है. So this is before birth. एक बार oogonia में से primary oocytes बन गए, and then these are stuck here forever. ठीक है, अभी puberty के बाद ही ये कुछ develop होंगे. So these are temporarily arrested at this stage, and these are known as primary oocytes. They are still diploid. ये बात ध्यान रखना, they are still diploid. Now primary oocyte, it gets surrounded by a layer of granulosa cell. ठीक है, आप देख सकते हो ये है बीच में जो आपको एक बड़ा सेल दिखाया है, that is the primary oocyte. Okay, and the primary oocyte is covered by these small blue colored cells. Can you see? तो ये blue color के जो सेल है, they are known as granulosa cell. ठीक है, तो granulosa cell के जो है वो उसको surround करते हैं oocyte को. And if you remember, in spermatogenesis you had Sertoli cells, है ना, जो nursing का काम करते थे, nourishment का काम करते थे, for providing nourishment to the developing या maturing sperms. उसी हिसाब से इधर you have granulosa cells. ठीक है, अभी sperm के हिसाब comparison में this ovum is much more important. क्यों? क्योंकि एक ही बनेगा. ठीक है, एक ही ovum बनेगा हर महीने.
तो वो एक के पीछे पूरी जान लगा देते हैं सारे सेल्स, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जो है उनका नाम है granulosa cells. So you can see one small layer is present outside the primary oocyte, ठीक है। तो ये primary oocyte के बाहर जो ये layer है, and together if you want to call it, you call it primary follicle, ठीक है। ये पूरा जो बनता है स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे primary follicle. Primary follicle has granulosa cell and oocyte. A large number of these follicles degenerate by puberty, ठीक है। जब तक puberty reach होती है तब तक we had started with a lot of primary follicles, लेकिन ये primary follicles या primary oocyte में से a lot of them degenerate, ठीक है। कितने बचते हैं? तो 60,000 से 80,000 जितने ही बचते हैं in each ovary, ठीक है। तो हर एक ओवरी में 60 to 80,000 primary follicles are left by the time of puberty. These primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cell. अभी आप देख सकते हो granulosa cell, इसको बोलेंगे primordial follicle, लेकिन this term I don't think is given in your textbook. So primordial follicle बोलते हैं, primordial just means the first, ठीक है। तो ये first follicle है जिसमें granulosa cells are quite flat. उसके बाद the granulosa cells they become cuboidal, ठीक है। तो इसमें you can see the difference between these blue colored cells and the second diagram's blue colored cells. So they are also granulosa cells, right? So they get surrounded by more and more layers of these granulosa cells. उसमें division होगा, cell division, and you can see a lot of such granulosa cells. And theca cells. तो इसके बाहर जो purple color के आपको cells दिख रहे हैं, there is a lining, no? So that is known as theca cells, ठीक है। तो together theca cells plus a lot of layers of granulosa cells and the oocyte, okay, which is the primary oocyte, ये तीन चीजों को आप मिला के बोलोगे secondary follicle, ठीक है। So this here is the secondary follicle. You have from outside to inside you have thecal cells, which is a layer of cells, okay. Then you have granulosa cells, and the innermost cell is the oocyte, which is still in the uh, um, arrest position, okay. It is still in the prophase 1 arrest position. अभी क्या होगा? The secondary follicle transforms into tertiary follicle. तो आप नीचे देखो डायग्राम में, ये secondary follicle है। secondary follicle जो है उसमें ये जो पिंक लाइन दिखाई है उसके अंदर के जो सेल्स है they are granulosa cells, और पिंक लाइन के बाहर वाले जो है they are thecal cells, ठीक है। और बीच में जो सबसे बड़ा सेल है that is your primary oocyte, ठीक है। तो अभी प्राइमरी oocyte वाला जो ये पूरा follicle है it will grow in size. इसमें और भी सेल्स जो है वो ऐड होंगे। यू कैन सी द थिकल सेल्स है उसमें भी एडिशन हो रहा है। तो द थिकल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लेयर्स नाउ, और ग्रैनुलोसा सेल्स में भी लेयर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फॉलिकल जो है वो साइज में बड़ा हो रहा है। So the tertiary follicle is characterized by fluid filled cavity known as antrum. इस secondary और tertiary में क्या difference दिख रहा है आपको? तो here you can find some empty patches, है ना, बीच में थोड़े patches हैं जहाँ पे कोई भी सेल नहीं दिख रहा। तो ये जो empty patches है these are known as antrum, और antrum के अंदर present होता है antral fluid, ठीक है ना, वो fluid filled cavities है। The theca layer gets organized into an inner theca and outer theca. तो इसमें जो layers दिख रहे हैं आपको thecal cells के, तो उसमें inner layer जो है इसको बोलेंगे theca interna, और outer layer जो है उसको बोलेंगे theca externa, ठीक है। तो इस तरीके से thecal layers बन जाते हैं। The primary oocyte grows in size and completes its first unequal meiotic division. अभी tertiary follicle जो होगा, tertiary follicle के अंदर the oocyte will be of which type? The oocyte will be secondary oocyte, ठीक है ना। अभी लोग देखो गलती करते हैं। On the right hand side you can see the diagram for both of the things. On the in the diagram itself you have on the left which is oogenesis, ठीक है। On the right you have follicle development. oogenesis जो है वो हम ओवम की बात कर रहे हैं, ठीक है, गैमेट की बात कर रहे हैं। लेकिन फॉलिकल डेवलपमेंट जो है उसमें गैमेट के अलावा भी सेल्स जो है दे आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो इट डज नॉट मीन कि प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte, टर्शरी फॉलिकल के अंदर टर्शरी oocyte, ऐसा मत करना, है ना। ध्यान से सुनो। तो till the secondary follicle level you have primary oocyte only,
वो अभी तक प्राइमरी oocyte लेवल पे ही अटका हुआ है, ठीक है, इधर जो देख रहे हो। फिर एट दिस पोजिशन जब वो टर्शरी oocyte में डेवलप होगा और भी बड़ा हो रहा है, ओके, एट दिस पोजिशन, तो यू कैन सी दिस प्राइमरी oocyte विच इज स्टिल डिप्लॉयड, और वो प्रोफेज 1 में स्टक है, वो अपना मियोसिस 1 खत्म करेगा। मियोसिस 1 के एंड में यू गेट 2 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है ना। अभी इसमें अनइक्वल मियोटिक डिवीजन लिखा है, सोचो, एक तो मियोटिक डिवीजन ऑलरेडी मींस अनइक्वल डिवीजन, लेकिन इसमें अनइक्वल किस हिसाब से बोल रहे हैं, साइज के हिसाब से। सो यू हैव वन सेल विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, एकदम छोटू सेल बनेगा जिसको बोलेंगे पोलर बॉडी, ओके। दिस स्मॉल सेल इज नोन एज पोलर बॉडी, एंड देन यू हैव अ लार्ज सेल जो एक बड़ा सेल रह जाएगा, दिस नाउ इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। तो ये बात याद रखो, सेकेंडरी oocyte है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, दिस सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट इन द टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। और टर्शरी फॉलिकल की स्पेशलिटी क्या है, तो यू हैव 2 layers of thecal cells, then in between granulosa cells you have some cavities which are known as antrum, which are then filled with fluid, ठीक है। तो इधर तक आप समझ लो कि यू स्टार्टेड विथ oogonia, जब बेबी होता है तभी, उसका बर्थ जब हो जाए, उसके आफ्टर बर्थ, ओके, ऑल ऑफ दोज सेल्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी oocyte स्टेज ओनली। प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। प्राइमरी oocyte का नंबर इज 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, उससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ कम ही होते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी oocyte आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी शुरुआत हो जाएगी उसके बाद द प्राइमरी oocyte इट विल डेवलप, ओके, उसके आजू बाजू पूरा फॉलिकल बनेगा। तो फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल इट विल ग्रो इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल जब जाएगा तब इट विल कंप्लीट इट्स मियोसिस 1। मियोसिस 1 के कंप्लीशन पे यू फाइंड 2 सेल्स, वन स्मॉल सेल इज नोन एज पोलर बॉडी, उसका कोई काम नहीं है, वो मर जाता है। then you have only one large cell which is known as secondary oocyte. तो secondary oocyte कहाँ देखने को मिलता है पहली बार, it is seen in the tertiary follicle. The tertiary follicle with secondary oocyte, ठीक है ना। अभी समझ रहे हो ना, हम पूरे फॉलिकल की बात करें तो फॉलिकल का स्टेज कौन सा है, टर्शरी, लेकिन oocyte का स्टेज कौन सा है, सेकेंडरी। तो this tertiary follicle it changes, it further grows into a mature follicle which is also known as Graafian follicle, ठीक है ना। अभी और बढ़ते जा रहा है सेल का नंबर, and then it is forming this mature follicle also known as Graafian follicle. The secondary oocyte forms a glycoprotein membrane around it known as zona pellucida. ठीक है, चलो अभी ये डायग्राम में देख लेते हैं। ऑन द बॉटम डायग्राम व्हाट यू आर सीइंग इज एक्चुअल स्लाइड, है ना, वो स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे तो दिस इज हाउ अ मैच्योर फॉलिकल विल लुक लाइक। इतना बड़ा होता है फॉलिकल, और इसमें आप क्लियरली देख भी पाओगे। कैन यू सी दिस आउटर मोस्ट लेयर जो लाइट कलर में दिख रहा है, दैट इज द थीकल लेयर, वो थीकल लेयर है, ठीक है ना। उसमें जितने डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे न्यूक्लियस है। उसके बाद अंदर का एक डार्क लेयर है, सो दिस डार्क लेयर इज एक्चुअली योर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। द बिगेस्ट सेल यू कैन फाइंड इज योर सेकेंडरी oocyte, ये सबसे बड़ा सेल जो है दैट इज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू ऐसा खाली आपको दिख रहा है रीजन, पूरा एम्प्टी है, वाइट है, दैट वाइट कलर्ड रीजन इज एक्चुअली योर जोना पेलोसिडा, ठीक है ना। वो प्रोटीन से बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से, इट इज लाइक अ क्लियर जोन। जब इनवर्टिब्रेट्स की बात करो तो ये क्लियर जोन को या ग्लाइकोप्रोटीन को जेली कोट भी बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो जेली जैसा दिखता है। तो रिमेंबर दिस, आपके ग्राफिन फॉलिकल में सबसे बीच में है oocyte, सेकेंडरी oocyte, उसके बाद है जेली जैसा कोट जिसको जोना पेलोसिडा बोलेंगे। आउटसाइड द जोना पेलोसिडा देयर आर सम ग्रैनुलोसा सेल्स, दिख रहे हैं आपको। तो ये ग्रैनुलोसा सेल को बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना हमारा कोरोना वैक्सीन या कोरोना जो कोविड-19 है वो वाला नहीं, ठीक है। कोरोना wherever you hear it means crown, ओके, अ सर्कल। तो ये जो इसके आजू बाजू में एक क्राउन जैसा सर्कल जैसा बन रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया कोरोना रेडियाटा, ठीक है ना। अभी लुकिंग एट दिस अपर डायग्राम, ये ऊपर दिया हुआ डायग्राम एक बार देखते हैं। हियर दिस इज अ कार्टून डायग्राम, है ना, ड्रॉ किया हुआ। तो आउटर मोस्ट इज थीका एक्सटर्ना, ये फॉलिकल की बात कर रहे हैं, फॉलिकल में सबसे बाहर वाला होगा थीका एक्सटर्ना। देन यू हैव थीका इंटरना,
थीका इंटरना के बाद जो भी आपको सेल्स दिख रहे हैं, these are the graphian granulosa cells, ठीक है ना, all of these are granulosa cells. Then you have this, okay, the cells surrounding the primary oocyte are known as corona radiata. तो देख लो आप, ये corona radiata. बीच में जो खाली जगह है जहाँ पे कोई भी cells नहीं है, that is known as antrum. Fine. Now talking about the oocyte, तो ये हो गया आपका secondary oocyte, and the blue colored one is the nucleus, जो अभी भी haploid है. Surrounding this oocyte there is a small empty space, है ना, जो glycoprotein से filled है, तो that empty space is known as zona pellucida. तो ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte is ready. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स. अभी ये जो अगर आप साइड व्यू में से देखो ना, ये टॉप व्यू है. इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द साइड इट लुक्स लाइक दिस. अगर ये आपका प्लेन है या ये अगर आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो उसके ऊपर ये जो भी ग्राफिन ग्रैनुलोसा सेल्स जो है उसका डिवीजन होके और पूरा कैसे बनेगा फॉलिकल, ऐसे 3D में. ओके, सो इफ यू लुक एट दिस फॉलिकल फ्रॉम द साइड इन 3D, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा. एंड द सेकेंडरी oocyte विल बी प्रेजेंट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन. ओके, तो जब ये मेच्योर हो जाएगा तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे से इट विल बी हियर, इट विल रप्चर, है ना, फट जाएगा पूरा. तो फट के ये जो डार्क मैंने रेड कलर का डॉट दिखाया है वो आपका सेकेंडरी oocyte है, तो दिस विल बी रिलीज्ड. ठीक है, तो इस तरीके से दिखता है आपका ग्राफिन फॉलिकल साइड में से 3D में. और आप देख सकते हो कि कैसे सिर्फ oocyte जो है वो ही फट के बाहर निकलता है. ओके, so फटना is rupturing, right? So here the graphene follicle it ruptures and releases the secondary oocyte from the ovary by the process known as ovulation. Process का नाम है ovulation. तो आप देख लो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना नीचे अभी ये वाला डायग्राम. ओके, so here this is the ovary. ये पूरी ovary है. ओवरी में दिस रेड कलर्ड पोर्शन दैट यू सी, मैंने आपको बताया 3D में दिखता है, तो देख लो आप ये 3D में पूरा बाहर निकल के आया है. And in this 3D structure also, this is the whole follicle, mature graphene follicle. अब ये mature graphene follicle में सबसे ऊपर जो है, that is your secondary oocyte, और उसके आजू बाजू के कुछ cells. ठीक है, तो this is referred to as egg या egg cell बोल दो, ovum बोल दो, जो भी बोल दो. ठीक है, तो ये येलो कलर का आपको जो दिखाया है that is the egg cell. तो ये पूरा rupture होके this egg will be released. ठीक है, तो the process is known as ovulation. Now talking about the mature ovum, ये जो फट के बाहर निकल गया तो वो कैसे दिखता है, क्या चीज है. So this mature ovum is still a secondary oocyte. वो अभी भी secondary oocyte stage पे ही है. And even if you want to know where exactly in the secondary oocyte, which stage it is at, so it is at stage of metaphase 2. Meiosis 2 जो होता है उसके metaphase 2 में it is arrested. वो उधर ही arrest होके पड़ा है. So it does not have yolk. जो ह्यूमन मेच्योर ओवम है उसमें योक नहीं होता है. ठीक है, जैसा आपने एग में देखा होगा, चिकन एग में योक होता है येलो कलर का, जिसको गुजराती में या नॉर्मल भाषा में जर्दी बोलते हैं. तो दैट इज नॉट सीन इन द ह्यूमन एग, तो इट इज कॉल्ड ए लेसिथल. अगर योक होता है तो उसको बोलेंगे लेसिथल, अगर योक नहीं होता है तो उसको बोलेंगे ए लेसिथल. द ooप्लाज्म, जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे ooप्लाज्म. ओके, so the ooप्लाज्म consists of a large nucleus and it has a plasma membrane. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी स्पेस है, there is a space that has been created, जो ये आपको कलर में दिख रही है. okay, so that space which is created is known as perivitelline space. अभी कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नया नाम पड़ जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन. तो विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की जो जगह है, एम्प्टी स्पेस है, दैट इज नोन एज पेरीविटेलाइन स्पेस. पेरीविटेलाइन स्पेस के बाहर ये जो छोटी सी स्पेस होगी उसके बाद आता है जोना पेलोसिडा विच इज नॉन सेल्यूलर. वो सेल से नहीं बना है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है. And outside that you can see the cells of corona radiata. ठीक है ना, इसके पहले हमने देखा था these are the cells of corona radiata. तो वो ओवम के साथ ही बाहर आ जाता है some of these cells. ठीक है.
राइट, द साइड ऑफ द ओवम विच प्रोड्यूसेस द पोलर बॉडी, इसमें से जहाँ पे पोलर बॉडी बनता है ना वो साइड को बोल देते हैं एनिमल पोल, एंड द ऑपोजिट साइड इज नोन एज वेजिटल पोल। ठीक है, ये एनिमल पोल वेजिटल पोल हमको अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेटर ऑन जब हायर स्टडीज यू विल डू, यू विल अंडरस्टैंड कि ये जब क्लीवेज होगा ना, जाइगोट में से एम्ब्रियो बनेगा, तभी दीज पोल्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक पोल पे लेटर से हेड बन रहा है तो दूसरे पोल पे टेल बन रही है, ऐसे। ठीक है ना, तो ओवम के टाइम से ही डिसाइड हो जाता है कि विच साइड विल बी फॉर व्हाट, ओके, किस तरीके से क्लीवेज होगा, किस तरीके से डिविजन होगा। फाइन, ओके। So the pole where you have first polar body is known as animal pole. Chalo. So very quick summary of your oogenesis and follicular genesis. You start with oogonium. Oogonium जो है they are diploid, and when the baby is still in the mother's womb, ठीक है ना, जब female child है वो अभी भी born नहीं हुई है, तब तक जो भी ओगोनियम है they will keep on dividing by mitosis. जैसे ही बर्थ हो गया उसके बाद नए oogonia ऐड होते हैं नहीं, these oogonia undergo mitosis and they form the primary oocyte. Primary oocyte जो है these are frozen in prophase 1. प्राइमरी oocyte के आजू बाजू ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो एक लेयर बनाते हैं, सो दिस इज नोन एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद देर आर ओनली few hundred thousand ovum और प्राइमरी फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द मेच्योर ओवरी, ठीक है, प्यूबर्टी के आसपास। सो दीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। okay, primary follicle is nothing, it still has the primary oocyte, और उसके आजू बाजू के granulosa cells जो है they become cuboidal in nature. Now this primary follicle after puberty it undergoes maturation and development, तो वो बड़ा होता जाएगा। So from primary follicle you get secondary follicle. Secondary follicle जो है it will have multiple layers of granulosa cells and one layer of thecal cells. This secondary follicle it will have primary oocyte, तो ये primary oocyte जो है वो अभी divide होके you will finally get secondary oocyte, ठीक है। तो secondary oocyte will be present in the tertiary follicle. Tertiary follicle की speciality क्या है? It has two layers of thecal cells, theca externa, theca interna. उसके अलावा it has a lot of granulosa cells. Granulosa cells के अलावा it has in between a little space which is known as antrum. The oocyte is in secondary oocyte form, ठीक है, तो tertiary follicle secondary oocyte. ये tertiary follicle जो है वो और बड़ा होता जाएगा, the antral cavity will keep on increasing and this is how you form the mature Graafian follicle, ठीक है। तो in the mature Graafian follicle you still have the secondary oocyte और ये बाकी के cells. The granulosa cells surrounding the oocyte are known as corona radiata. अभी जब मेच्योर हो जाएगा, पूरा टाइम उसका आ जाएगा, देन इट विल रप्चर, फट जाएगा। फटेगा तो जो भी सेकेंडरी oocyte है दैट विल बी रिलीज्ड and surrounding it you will also have a layer of these corona radiata cells, ठीक है। On the right hand side the diagram that you see is actual cross section of a ovary, ठीक है। तो ओवरी में आप देख सकते हो छोटे छोटे जो राउंड्स दिख रहे हैं, दे आर द प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है जिसमें आपको फर्स्ट टाइम एंट्रम दिख रहा है, एंड दिस हियर इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसकी साइज देख लो आप, और सेल के टाइम पे आई हैड टोल्ड यू कि द लार्जेस्ट, मतलब साइज के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो द लार्जेस्ट सेल इज एग सेल, लेकिन लंबाई के बारे में बात करते हो तो द लॉन्गेस्ट सेल इन दैट केस विल बी न्यूरॉन, ठीक है। तो द लार्जेस्ट सेल विल बी एग सेल या ओवम। तो ये देख लो आप कितना बड़ा सेल है। Now talking about the hormones. So one ovum is produced by any ovary, okay, any one ovary during each menstrual cycle. तो ये बात आप समझ लो कि हर menstrual cycle या हर महीने any one ovary will release only one ovum. तो ये egg cell एक ही release हो रहा है, ठीक है। Okay. The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. तो जो grow हो रहे हैं follicles, ovarian follicles, primary follicle से लेके Graafian follicle तक, तो ये सारे follicles जो है they start secreting estrogen, ठीक है। अभी ये estrogen की effects क्या दिखती है? तो the estrogen
you can see the effects by growth and activities of female. Secondary sex organs. Secondary sex organs मैंने आपको बताया था. These are the organs which are not directly related to gametogenesis, but they help in the process. Okay. Then there is development of ovarian follicles because of estrogen. There is appearance of female secondary sex characters. जो भी secondary sex characters या accessory characters है for females like high pitch voice, mammary glands. ये सारे के सारे are the result of estrogen. Okay, and estrogens, they also regulate the female sexual behavior. Now talking about the second hormone, which is known as progesterone. तो जो रप्चर्ड फॉलिकल था, है ना, हमने इसके आगे देखा था कि ये फॉलिकल तो रप्चर हो गया, oocyte जो है दैट हैज बीन रिलीज्ड, लेकिन बाकी के फॉलिकल का क्या होगा? सो दिस रेस्ट ऑफ द फॉलिकल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम. लूटियम का मतलब होता है येलो. ठीक है, तो ये थोड़ा येलो टाइप का दिखेगा बिकॉज इट इज फुल ऑफ कोलेस्टेरॉल, फुल ऑफ फैट, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम. देख रहे हो आप कितना बड़ा हो गया. एंड दिस विल बी एक्चुअली सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो जो फॉलिकल्स है, लाइव फॉलिकल्स है, दे विल सिक्रीट लाइव इन द सेंस जिसके अंदर oocyte है, दे विल ऑल बी सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन. लेकिन जैसे ही oocyte निकल गया उसके बाद दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड फाइनली वो डीजेनरेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ कॉर्पस एल्बिकन्स. एल्बिकन्स या एल्बी जहां भी आता है उसका मतलब होता है वाइट. चलो, राइट. सो द कॉर्पस लूटियम secretes progesterone. प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? तो इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम फॉर फीटस अटैचमेंट. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को नाम देते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन. तो प्रेगनेंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एंडोमेट्रियम जो है इट शुड बी रेडी. ठीक है ना, उसके अंदर टिश्यूज है, ब्लड है, और जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो सब होना, इट शुड बी प्रिपेयर्ड, ओके, बिफोर द फीटस गेट्स अटैच्ड या द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड, टू बी मोर स्पेसिफिक. तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखो. ओके, इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ alveoli. हमने मेमोरी ग्लैंड्स में alveoli देखे थे. जस्ट लाइक इन योर लंग्स यू हैव alveoli like structures in mammary glands as well. तो वो alveoli में growth है और उसका formation है, वो stimulate करते हैं. It also supports milk secretion. अभी हमने पढ़ा है कि milk secretion के लिए जो important hormone है that is prolactin. But here also you can see कि वो alveoli develop करवा रहा है, इसलिए वो milk production में या secretion में it is involved. But it is not the major hormone. Okay, it is supporting hormone. It supports milk secretion in lactating mother. मतलब सिर्फ post child birth ही होगा, उससे पहले नहीं. Fine. Coming to the menstrual cycle. Menstrual cycle जो भी है ना, वो हमने अभी तक जो भी oogenesis पढ़ा या folliculogenesis पढ़ा, उसका combination है along with this endocrine system. So in Greek, okay, so menstrual cycle is also known as menarche. और menarche का Greek में अगर आप टुकड़े करके देखो तो men का मतलब होता है month और arc का मतलब होता है beginning. So every month this happens, hence it is known as menarche. When does it begin? So menstruation begins at puberty, which is around 12 to 15 years. This number keeps on changing from book to book, but you can stick to this 12 years. Okay, 12 years के आसपास जो है puberty begins. What actually menstruation is? It is bleeding from uterus. Okay, जो endometrium का layer है जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया था, तो उतना पोर्शन endometrium का bleed होके निकल के बाहर आ जाता है. Okay, so menstruation is bleeding from the uterus at interval of 1 lunar month. Lunar month मतलब moon की cycle अगर आप देखो तो it is around 28 to 29 days. Menstruation is seen in humans, apes and some old age monkeys. Like old age in the sense age नहीं, उसको क्या बोलते हैं, new old world monkeys. My mistake. New world monkeys or old world monkeys. So new world monkeys are found in South America, right? And old world monkeys are found in Africa and Asia. तो ये जो old world monkeys है, apes है और humans है, मतलब primates. Okay, some of these primates. So there you can see menstruation. बाकी के जो भी animals है या mammals है उसके अंदर estrous cycle होता है. Okay, and this is menstrual cycle, मतलब to bleed out.
बाकी के लोग जो भी मैमल्स है उसमें ब्लीडिंग इसलिए नहीं होता है बिकॉज दे आर लिविंग इन द वाइल्ड। तो इफ दे स्टार्ट ब्लीडिंग आउट तो उसके पीछे प्रेडेटर्स पड़ सकते हैं, है ना। सो दिस इज ओनली सीन इन ह्यूमन, एप्स एंड सम monkeys. One ovum is released in middle of each menstrual cycle. मतलब अगर 28 दिन का साइकिल है तो उसके बीच में exact in the center, which is on the 14th day, there will be release of one ovum. This whole cycle it keeps on continuing till the age of 40 या 45, जिसके बाद वो stop हो जाता है, तो that is known as menopause. तो अगर आप फीमेल की बात कर लो तो their fertile period is only from 12 years of age to 50 years of age. ठीक है। The menstrual cycle, it has 4 phases. Let us start from the first phase, which is the menstrual phase. ठीक है। menstrual phase है, उसको menses भी बोलते हैं। menses is basically loss of blood. तो ये सब डायग्राम आप देख लो, ये आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। एट द बॉटम व्हाट यू कैन सी इज योर एंडोमेट्रियम। ठीक है। एंडोमेट्रियम मैंने आपको बताया था कि वो पूरा फ्लो नहीं हो जाता है ना, पूरा टूट नहीं जाता। यू स्टिल हैव सम पोर्शन ऑफ इट विच विल रिमेन, और टॉप पोर्शन जो है इट विल बी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये हो गया मेंसेस। ठीक है, विच इज शोन हियर। Menses takes place for 3 to 5 days. It depends from person to person. Here, the production of LH or luteinizing hormone is less, causing the degeneration of corpus luteum. तो इस यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट में क्या समझने को मिला, दैट कॉर्पस लूटियम अगर उसको आपको संभाल के रखना है ना, इफ यू वांट टू कीप द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस लूटियम यू रिक्वायर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देखो ल्यूटियम लूटियम अभी समझ में आ रहा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, कॉर्पस लूटियम को बचा के रख रहा है, उसको स्टेबल रख रहा है। तो स्टार्टिंग में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डे 1 to day 5, then here the LH level is low. तो इधर आप देख लो सबसे ऊपर जो आपको दिया गया है, these are the pituitary hormone levels of LH and FSH. तो LH is shown in blue, तो इधर the levels are low. ठीक है, वो एक लेवल से कभी गिरते नहीं है, they are not zero. कभी ब्लड में 0 LH हो ऐसा नहीं होगा, बट दे आर लो। ठीक है, तो लो से शुरुआत होती है, बिकॉज ऑफ देयर लो लेवल्स द कॉर्पस लूटियम इज डीजेनरेटेड। और कॉर्पस लूटियम नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो वी हैव सीन दैट प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम वॉल। तो इफ द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन इज लेस द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स ब्रेकिंग। अभी प्रोजेस्टेरॉन तो है नहीं तो इसको कोई बचाएगा नहीं। So the it starts breaking down and the menses begins. The menstrual flow जो भी होगा it is endometrial secretion. मैंने बात की थी आपको कि एंडोमेट्रियम में से the wall secretes, it is glandular है ना, तो बहुत ज़्यादा secretion करता है of mucus of different fluids. तो वो endometrial secretion होगा। unfertilized ovum मतलब ovum जो इसका fertilization नहीं हुआ, that plus blood. So all these three things compose the menstrual flow. तो ये हो गया आपका सबसे फर्स्ट फेज विच इज मेंस्ट्रुअल फेज। इट लास्ट्स फॉर 3 to 5 days और हम इसको डे 1 से डे 5 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। द सेकेंड फेज इज नोन एज फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज नाम पे से ही पता लगता है, या प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बड़ा होना, है ना, नंबर में मल्टीप्लाई होना। सो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल बड़ा होगा। प्रोलिफरेशन का मतलब है सेल नंबर विल आल्सो इंक्रीज इन द फॉलिकल्स। सो इट इंक्लूड्स फ्रॉम साइकिल फ्रॉम डे 6 to day 13। तो ये छठे दिन से लेके 13वें दिन तक यू हैव फॉलिकुलर फेज। व्हाट हैपेंस इन इट इज योर एफएसएच। अभी एफएसएच का नाम ही ऐसा है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ेगा तो इट विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल एज वेल। ठीक है, तो ये जब तक टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तब तक यू कैन सी दैट इट्स लेवल इज क्वाइट मेंटेन फाइन। और ये जैसे फॉलिकल बढ़ते जा रहे हैं साइज में, दे आर ग्रोइंग। ओके, यू कैन ऑल्सो सी कि एस्ट्रोजन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स सिक्रीट व्हाट, दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द फॉलिकल एंड एस्ट्रोजन दे फॉर्म अ लिंक। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड वैस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इधर आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम पूरा आधा हो गया है। देन फ्रॉम
the day number 6 it will start growing back in size. तो ये size में from this menstrual phase it is increasing in size, है ना? तो this increase in size is because of estrogen. समझ रहे हो? इसमें growth जो हो रहा है वो estrogen की वजह से हो रहा है. It stimulates growth and vascularization of endometrium. Vascularization का मतलब होता है ये जो आपको नीचे से क्रैक जैसा दिखाया है, these are actually blood vessels. तो वो blood vessels जो है उसका भी growth करवा रहा है, इसलिए vascularization बोलते हैं. The third phase is ovulation. Ovulation सिर्फ the 14th day, okay, that one day only you will see ovulation. तो ये ovulation कैसे होता है? Basically there is a LH surge. LH surge का मतलब होता है LH के concentration में अचानक से on the 14th day there is a rise. ऐसा आप देख रहे हो पीक बन रहा है. तो LH में भी पीक बन रहा है, उससे पहले FSH में भी पीक बन रहा है. तो फॉलिकल अपने सबसे मेच्योर फेज में होगा बिकॉज ऑफ FSH राइज, और LH की वजह से इट विल ब्रेक. ओके, तो उसका रप्चर जो होगा, LH स्टिमुलेट्स रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल. तो इधर आपको जो दिखा है दैट इज ओव्यूलेशन. ठीक है, ओवम जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा फ्रॉम द फॉलिकल. So this release of ovum is known as ovulation. This happens on the 14th day. हो गया, ये वीडियो को चल नहीं रहा, बट this was basically showing कि ये कैसे, मैंने आपको बताया था ना 3D में, that this is the ovum और उसके आजू बाजू के कोरोना रेडिएटा सेल्स, they will be released, and this is how we already saw कि वो फिम्ब्रिया की मदद से they will be taken up in the oviductal funnel and then in the oviduct. The final phase is known as luteal phase. Luteal phase नाम पे से ही आपको पता लग रहा है, कितनी सारी जानकारी आपको इसमें से ही मिल रही है. देखो, luteal phase का मतलब हो गया कॉर्पस लूटियम से रिलेटेड है एंड LH से भी रिलेटेड है. ठीक है, सो हियर द LH लेवल्स आर आल्सो हाई. देखो आप LH लेवल्स पीक से नीचे उतर के बट दे आर स्टिल कंपैरेटिवली हाई. तो वो LH लेवल्स जो है वो दे विल मेंटेन द कॉर्पस लूटियम. It includes day 15 to day 28, and the LH it stimulates ovulation plus the conversion of rest of the follicle. ये जो बाकी का बचा हुआ follicle है, graphene follicle, that will now get converted into corpus luteum. ये येलो कलर का क्यों लग रहा है? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्टेरॉल जमा करके रखा है. ठीक है, corpus luteum secretes large amount of progesterone. Progesterone is a steroid hormone just like estrogen. ठीक है, हम अभी देख सकते हो कि जब ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल्स फॉल डाउन. ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि फॉलिकल जो है दैट इज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम जैसे ही बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शूट हो रहा है, देख सकते हो आप. तो दिस हियर द पीक विल ऑलवेज बी वेयर द कॉर्पस लूटियम इज प्रेजेंट. प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम. बनाता कौन है? एस्ट्रोजन. मेंटेन कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम बनाने का काम एस्ट्रोजन का था, लेकिन मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल म्यूकस, वजाइनल एंड फेलोपियन फ्लूइड्स. तो जितने भी फ्लूइड्स है उसका सिक्रीशन भी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो करवाएगा. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज वी विल कम अक्रॉस दिस पॉइंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्लूइड का क्या काम है. फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस एट द एंड? अभी ल्यूटियल फेज के एंड में इफ देयर इज नो इम्प्लांटेशन, मतलब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है, देन दिस कॉर्पस लूटियम वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा, है ना, डीजेनरेट होता जाएगा. तो जैसे ही वो छोटा होता जा रहा है, मरता जा रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता जा रहा है. जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो वो एंडोमेट्रियम को संभाल के नहीं रखेगा. एंडोमेट्रियम को संभाल के नहीं रखेगा तो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड फ्रॉम देयर द नेक्स्ट साइकिल विल बिगिन, जो मेंसेस से शुरू होती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ मेंसेस स्टार्ट्स विथ लोअर और लोवेस्ट प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, और जैसे ही मेंसेस खत्म होगा you can start seeing development of FSH, okay, follicles because of FSH. follicles grow हो रहा है, follicles जैसे ही बढ़ेंगे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम भी बढ़ेगा क्योंकि उसका काम है एस्ट्रोजन का, ओके, टू इंक्रीज द एंडोमेट्रियम और उसका वैस्कुलराइजेशन. जैसे ही मेच्योर फॉलिकल बन जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा. फिर LH के कारण LH सर्ज होगा, ओके, ऑन द 14th डे देयर विल बी इंक्रीज इन द LH, जिसके कारण ग्राफिन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन होगा.
नाउ दिस LH नाम में ही है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करेगा. सो नाउ द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल विल बिकम कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करता है, इसलिए वो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा. बट इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को बचा के रखने का काम कर रहा है. तो टिल द प्रोजेस्टेरॉन इज देयर, योर एंडोमेट्रियम इज सेफ. जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता गया, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो छोटा 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 होता चला गया, ठीक है. तो as it regresses in size, the progesterone levels also decrease. Progesterone levels decrease हो गए तो endometrium will start breaking and the next cycle will begin. तो यही है बस ये summary, the same thing. And tomorrow we will be discussing fertilization, and it will also include like pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. So yeah, see you tomorrow.